Assalamu alaikum. This is our third session on the assessment methods in undergraduate medical education. इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। एक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिस्क्राइब द वेरियस असेसमेंट मेथड्स टू असेस द नॉलेज ऑफ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ हेल्थ साइंसेस। हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। द सेकंड वन जिसमें हम असेसमेंट मेथड्स टू असेस द क्रिटिकल स्किल्स ऑफ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। इसकी जनरल डिस्कशन जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं सेकंड सेशन में। थर्ड सेशन में हम इसकी जो वेरियस मेथड्स है, जो ऑस्पी है, आज की है, या इसके अलावा पीयर असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है, 360 वैल्यूएशन है, तो फर्दर और भी इसकी जो किस्में हैं उस पर आज इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये पहला असेसमेंट मेथड है जो हम प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट commonly used. The OSCE is primarily used to assess the basic clinical skills. The students are assessed at a number of stations and discrete focused activities that simulate different aspects of clinical competence. अब ये नंबर ऑफ स्टेशन जो हैं ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ सेशंस पे, मुख्तलिफ डिसिप्लिन पे, सिचुएशन पे। सेशन की जो तादाद है ये 8 से यानी 5 से लेकर 26 तक तो जा सकती है। 20 हो सकती है, 15 हो सकती है, 10 स्टेशन हो सकती है। तो नंबर ऑफ स्टेशन जो है इसमें काफी जो है वो रेंज है फ्रॉम 5 to 20, 5, 26 इस तरह। इवन इट मे बी अप टू 30, लेकिन जितना ज्यादा होंगे फिर इसको कंट्रोल करना और जो है इससे ना मुश्किल हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टेशन ये उस पर भी दो डिपेंड करती है। एक तो हमारे कुरिकुलम पर भी डिपेंड करती है कि हाउ मेनी स्टेशन देयर वुड बी इनफ टू कवर एंड टू अवॉइड दैट लिमिटेड सैम्पलिंग। And secondly, it also depends on the availability of the examiners. If there are too much examiners, we may have 20 station or more than 20 station. But if we have that limited examiners, then we have to only arrange 10 to 12 stations. At each station, standardized patient, shortly known as the SPs, or the real patient or simulator may be used, and demonstration of specific skills can be observed and measured. ASCII station may also incorporate the assessment of interpretation, non-patient skills, as well as the technical skills. Each student is exposed to same station and assessment. Suppose there are 9 stations, तो हर एक स्टूडेंट जो है ये हर एक स्टेशन से होके गुजरेगा। तो इसके दो तरीके हैं कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। पहले तरीका तो ये है कि एक ही स्टूडेंट जो है एक ही टाइम पे, जो रूल नंबर 1 जो है, सपोज वो एंटर होगा और वो पहले स्टेशन पर बैठेगा। तमाम स्टेशन की जो टाइमिंग है ये 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन सबकी टाइम जो है ये एक जैसी होगी। अब 4 मिनट, सपोज सबकी 4 मिनट एक स्टेशन की टाइम है, तो आफ्टर 4 मिनट्स ये जो स्टूडेंट है ये सेकंड स्टेशन पे चला जाएगा और एक नया स्टूडेंट जो है ही विल एंटर द रूल नंबर 2 जो उसके साथ बाद पहले के बाद आ रहा है। ही विल जस्ट सिट एट द स्टेशन 1 एंड आफ्टर 4 मिनट्स के बाद, 4 मिनट और 4 मिनट गुजरने के बाद, ये दूसरे वाले स्टेशन पे जो बैठा था ये तीसरे पे जाएगा, पहले वाला दूसरे पे आएगा और तीसरा नया स्टूडेंट जो है ये एंटर होगा। इस तरह एक एक स्टेशन जो है 4-4 मिनट करने के बाद दे विल चेंज द स्टेशन, दे विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन, और एक एक स्टूडेंट जो है ही और शी विल एंटर इनटू द हॉल, टू द एग्जामिनेशन हॉल। लास्ट स्टेशन पे पहुंच जाएगा आफ्टर दैट, सपोज 9 स्टेशन है, तो व्हेन देयर 32 मिनट के बाद पहला स्टूडेंट जो पहले स्टेशन पे था, नाउ ही विल बी एट, ही विल जस्ट एंटर इनटू द 9th स्टेशन, लास्ट स्टेशन, और उस स्टेशन पे जैसे उनकी 4 मिनट कंप्लीट हो जाते आफ्टर 36 मिनट, तो ये स्टूडेंट जो है ही विल लेफ्ट द हॉल, और फिर जो है हर 4 मिनट के बाद जो है एक स्टूडेंट एग्जिट करेगा, एक स्टूडेंट जो है ये एंटर होगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 9 स्टेशन है, 9 स्टूडेंट्स को अंदर बुलाएं और हर एक जो है एक एक स्टेशन पे बैठ जाए, और हर 4 मिनट के बाद जो है 9 विल कम टू द 1, 1 विल गो टू 2, 2 into 3, और फिर इस नेक्स्ट 4 मिनट के बाद जो है फिर दे विल जस्ट सीक्वेंस के साथ स्टेशन चेंज करेंगे।
तो आफ्टर इससे ये होगा कि फिर नेक्स्ट 9 बंदों को बुलाएं, फिर वो बैठ जाएंगे एंड दे विल चेंज द स्टेशन विद ईच अदर। तो ये दोनों तरह की जो है एक्सेप्टेबल है, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। दोनों तरीकों में क्या होगा कि ईच स्टूडेंट इज एक्सपोज टू द सेम स्टेशन एंड असेसमेंट एज वेल एज each student in each station they will have similar time, that may be 3 minutes, then maybe 4 minutes or 5 or 6 minutes. Ask station may be short or long depending on the complexity of the tasks. जो मिनट्स हैं ये जो है डिपेंड कर देता है कि आप कितने मिनट्स रखते हैं, कितने मार्क्स उसके रख देते हैं, ये उसकी कम्प्लेक्सिटी पर है। लेकिन स्टेशन की जो टाइमिंग है ये दे विल बी इक्वल टू ऑल। रीजन इज दैट कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो 4 मिनट की स्टेशन पे बैठा होता है और नेक्स्ट स्टेशन जो है वो सपोज 10 मिनट का है, तो यहाँ पे इससे पहले जितने भी स्टेशन हो सारे के सारे 4 मिनट के, एक सिर्फ 10 मिनट का है। तो 10 मिनट गुजरने से पहले ये स्टूडेंट जो है स्टेशन से नहीं उठेगा और बाकी जो है उन्होंने पेपर की होगी तो दे विल बी वेटिंग। दैट्स वाई अगर एक 10 स्टेशन का है तो फिर सब 10 स्टेशन की होनी चाहिए, या जो है यहाँ पे 6 मिनट के तो फिर सब 6 मिनट की होनी चाहिए। The number of stations may vary from a few as 8 to more than 20, although in OSCE with 14 to 18 stations is recommended to obtain a reliable measure of performance. यहाँ से रेबेरी से मुराद ये है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि इन्हीं स्किल्स में से एक इशू इसकी रिलेबिलिटी की है कि यहाँ पे समटाइम जो है और जो लिमिटेड सैम्पलिंग वाली इशू आ सकती है। इसके साथ साथ जो है लिटिल ऑब्जर्वेशन की भी वीडियो आ सकती है। तो ये जो 12 से 18 स्टेशन हम अगर रखते हैं तो इससे वो जो लिमिटेड सैम्पलिंग जो है वो कम कुरिकुलम से कम हिस्सा जो है असेस क्या होगा, असेस होगा, ये वाली इशू जो थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी। Scoring is done with a task specific checklist or a combination of a checklist and a rating scale, दोनों यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है if it is just the basic sciences within the checklist is enough। लेकिन अगर ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स क्लिनिकल केसेस हैं उसमें उसमें क्लिनिकल कंपेटेंसी ज्यादा है, उसमें हाई लेवल ऑफ थिंकिंग ज्यादा है, तो फिर जो है रेटिंग स्केल इज मोर रिकमेंडेड एंड मोर better than this one। Global rating produce equivalent result as compared to checklist, but there is difference between them, which we have discussed in detail in the previous session. The scoring of the students or trainees may be done by observer. These observers may be patient, may be faculty member, or may be standardized patient. Short case is the another assessment method to assess the practical skills of the undergraduate student of health sciences. Short cases assessment is commonly used to assess the clinical competence. In this type of assessment, students are asked to perform a supervised focused physical examination of a real patient and are then assessed on the examination technique. The ability to elicit physical sign and interpret these findings correctly. Several cases are used in one assessment to increase the sample size to avoid that less reliability just because of the lacking of that sampling, lacking of enough sampling. The long case, on the opposite of that, that is widely used in the past, but nowadays it has been replaced by the OSCE and OSCE. The long case are traditionally being used to assess clinical competence. In the long case, students interview and examine a real patient and then summarize their findings to one or more examiners who question the students by an unstructured oral examination on the patient problem and other relevant topic. अब ऑस्की में क्या होता है कि वहां पर रियल पेशेंट के साथ साथ जो हम उसको सिमुलेशन भी रख सकते हैं, वहां पे जो है एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट भी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग केसेस में जो मॉडल होंगे दे वुड बी रियल पेशेंट, और रियल पेशेंट के साथ उन्होंने उसका पूरा जो एक बहुत टाइम से उसके साथ वो उसके साथ डिस्कशन करेंगे जिसमें वो उसकी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करेंगे। उसकी एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद उसके फिर वो इंटीग्रेट करेगा सारे फाइंडिंग्स को, उसको समराइज करेगा, और फिर 2 या 2 से ज्यादा जो है या 2-3 एग्जामिनर जो है, या एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, उन एग्जामिनर के सामने जो है ये बैठ के और उनकी कुछ क्वेश्चन की आंसर देगा
और वो क्वेश्चन जो है वो इस पेशेंट और इस जो सिनेरियो है इससे रिलेवेंट होगी। और वो ये जो स्टूडेंट है ये ऑन द बेसिस ऑफ द गैदर डेटा जो है उन क्वेश्चन का आंसर देगा। द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद द पेशेंट इज यूजुअली अनऑब्जर्व्ड। ये एक है कि आस्क हिम ऑब्जर्वेशन कि हाउ ही इज डूइंग टू ऑब्जर्व एग्जामिन द पेशेंट, किस तरह वो स्पेशल टेस्ट करा रहे हैं, उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। तो आस्क के आस्पी में वो ऑब्जर्व होती है, जबकि यहाँ पे मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑब्जर्व नहीं होता। मेन फोकस जो है ये होता था कि वो किस तरह के क्वेश्चन के आंसर किस तरह देते हैं। डेटा जो गैदर करेगा वो उसकी अपनी प्रोसीजर है, जिस तरह वो कर सकता है डेटा गैदर करेगा। मेन थिंग और उसके असेसमेंट जो उसी ओरल एग्जामिनेशन पर होती थी, जो दो या तीन जो है ये एग्जामिनर उससे क्वेश्चन करते थे। द लंग केस है फेस वैलिडिटी, और फेस वैलिडिटी इसलिए उसकी अच्छी थी क्योंकि डॉक्टर्स जो उससे क्वेश्चन करते थे वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते थे, एक्सपर्ट टीचर्स होते थे। तो उस पेशेंट के बारे में वो जो रूटीन लाइफ में जो इनको एक्सपीरियंस होते उसी के बारे में वो क्वेश्चन करते थे। दैट इज द रीजन जो है उनका फेस वैलिडिटी जो है बहुत जो है ज्यादा होता था। इसी तरह ऑथेंटिसिटी भी होती थी, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स होते थे या जो एग्जामिनर्स होते थे जो वहां पे उसके असेसर होते थे, दे वर ट्रेन असेसर। However, the use of lung case assessment in high-stakes summative examination is not recommended, and in fact, it has been discontinued in several countries due to its low reliability. क्योंकि यहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशंस ये डायरेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी रिलेबिलिटी जो है ये उस तरह नहीं होती, नहीं थी जिस तरह की ऑब्जेक्टिव आस्क एंड आस्पी में होती है। What we mean by summative examination, there are two types of examination, formative examination and summative examination. दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। So its use in formative examination is encouraged because of its perceived educational impact. इसका एक असर है क्योंकि इसमें से स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन या डेटा जो है उसको गैदर करनी चाहिए थी, जो उसको उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो जाता है और उसका उसका आंसर नहीं आता, तो इसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट जब मैं पेशेंट करूंगा तो उसमें से आई विल ट्राई टू गैदर दिस सॉर्ट ऑफ डेटा। तो विद इन द कोर्स विद इन द प्रोग्राम के अंदर जो सपोज जिस तरह की मंथली या वीकली जो है या डेली बेसिस पे जो उनके राउंड होते हैं, उनकी जो के दौरान उनसे क्वेश्चन की जाती है, या बाकी जो उनका वीकली में इनका इस तरह एक टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, या उनका जो मिड टर्म होता है, सपोज जो अंडर ग्रेजुएट की बात कर ले, तो उसमें फिर वो करेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या क्या जो है डेटा जो है गैदर करना चाहिए। तो इसलिए विद इन द प्रोग्राम ड्यूरेशन, विद इन दैट कोर्स ड्यूरेशन जो है ये इसको जो एग्जामिनेशन उसको फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन कहते हैं। और डिग्री के लिए कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद जो एग्जामिनेशन होती है, जो फाइनल टर्म होती है, उसके बाद उसकी वो ईयर या वो डिग्री जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसको समेटिव एग्जामिनेशन कहते हैं। तो समेटिव एग्जामिनेशन में इसकी रेपिटी चूंकि बहुत लो है, इसलिए इसको nowadays it is not used, it has been discontinued, while in the formative examination it is still used, and it's recommended to be used because of its impact on their perceived education. So this is the difference between formative and summative assessment. Formative assessment's goal is to monitor students' learning and to provide ongoing feedback that can be used by instructors to improve their teaching and by students to improve their learning. और ये एग्जामिनेशन जो है ये वीकली बेसिस पे हो सकते हैं, मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, सिंपल जो मिड टर्म होता है उसको भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। कि जो कोर्स ड्यूरेशन जो होती है, जो सेमेस्टर ड्यूरेशन होती है, जो एनुअल सिस्टम ईयर होती है, उसकी मिड में जो है कि टेस्ट अगर ली जाए तो एग्जामिनेशन ली जाती है, अभी तक वो ईयर और सेमेस्टर और कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है यूजुअली ये इसलिए किया जाता है कि इज द स्टूडेंट्स एबल टू हैव दैट डिग्री, वो इस काबिल है कि वो जो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करे और वो प्रमोट हो जाए नेक्स्ट सेमेस्टर में, या नेक्स्ट उसकी कंप्लीशन या दैट ग्रेजुएशन हो जाए। तो ये जो है लास्ट में इनका एग्जाम होता है,
जिसमें वो पास फेल होगा, जिसमें वो या तो ग्रेजुएट होगा या ग्रेजुएट नहीं होगा, जिसमें वो प्रमोट होगा या प्रमोट नहीं होगा, तो उसको फिर कहते हैं द समेटिव असेसमेंट या समेटिव एग्जामिनेशन. Summative assessment goal is to evaluate students' learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standard or benchmark. So these are some of the aspects which we discussed between the formative and summative assessment. Evaluation during the learning process is just an ongoing process. They will be increased in some examination, they will be decreased in the scoring, they will be much more decreased, they will be again in the English. So this is an ongoing process, and at the mid of that there is assessment, assessment, assessment. जबकि समेटिव जो है ये कोर्स जारी है, और एट द एंड ऑफ द दैट कोर्स, एट द एंड ऑफ दैट प्रोग्राम जो इनको एग्जाम होता है, एंड ऑफ सेमेस्टर जो इनका एग्जाम होता है, दैट इज नोन एज द समेटिव एग्जामिनेशन. अगर हम मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पे मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस किस तरह चल रही है, और यहाँ पे इनको ग्रेड्स दी जाती हैं. क्योंकि सपोज अगर हम सेमेस्टर सिस्टम पे बात करें तो इनको जीपीए दी जाती है कि इनकी एक सेमेस्टर में कितनी जीपीए है, दूसरी में कितनी जीपीए है, तीसरे में कितनी जीपीए है. या अगर हम एनुअल की बात करें तो वहाँ पे परसेंटेज होती है, वहाँ पे ग्रेड्स होती हैं, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है. तो ये जो है इसकी होती है. जबकि ये मिड टर्म में अगर हम देखें तो मिड टर्म में ऐसी जीपीए वगैरह की बात नहीं होती. अगर हम उसकी लर्निंग की बात कर लें तो टारगेट जो है, द पर्पस इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग. ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट है उसकी रिजल्ट्स मिड टर्म में कम आ जाते हैं, तो टीचर्स का फोकस ये होगा कि इस स्टूडेंट्स की क्यों इतने स्कोर कम है. सो उस स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, उस पर कोशिश करेगा कि इसके रिजल्ट जो है इसके फर्दर जो है इसमें बेहतरी आ जाए. तो ये उसका पर्पस ये होता है, द विद इन द कोर्स जो है, विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो एग्जामिनेशन है, कि मॉनिटर किया जा सके और इसकी लर्निंग के प्राइस को इम्प्रूव किया जा सके. द पर्पस ऑफ द समेटिव एग्जामिनेशन इज टू एवेलुएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट. इसने डिग्री या कोर्स या सेमेस्टर जो है कंप्लीट किया है या इस काबिल है कि वो नेक्स्ट में प्रमोट हो जाए, वो अचीव करे, इस डिग्री जो है इसको अचीव करने या डिग्री लेने के काबिल है या नहीं है. अच्छा, इन फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन इंक्लूड लिटिल कंटेंट एरियाज. ऑब्वियसली अगर आप देखें मंथली टेस्ट होती हैं या उनकी सरप्राइज टेस्ट होती हैं या उनकी कुछ इस तरह मिड टर्म होती है, तो मिड टर्म में जितना कोर्स होता है ऑब्वियसली फाइनल टर्म में उतना नहीं होता, उससे ज्यादा होता है. तो मिड टर्म में उतना नहीं होता, तो इट मीन कि दे इंक्लूड द लिटिल कंटेंट ऑफ द होल फ्रॉम द होल कुरिकुलम. जबकि समेट्री एग्जामिनेशन में जितना भी कुरिकुलम होता है वो तमाम कुरिकुलम जो है वो इंक्लूड होता है इन द समेट्री एग्जामिनेशन. इवैल्यूएशन इंक्लूड कंप्लीट चैप्टर्स और कंटेंट एरियाज, यानी जितना भी कुरिकुलम उस सेमेस्टर का होता है, दैट ऑल इज इन्वॉल्व्ड इन द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. कंसीडर्स इवैल्यूएशन एज अ प्रोसेस, जबकि कंसीडर्स इवैल्यूएशन एज अ प्रोडक्ट इन द समेट्री एग्जामिनेशन. To increase the validity and reliability of long cases, several modifications have been introduced. For example, observing the candidate. अब हमने लॉन्ग केसेस में डिस्कस किया कि यूजुअली फोकस किया जाता है ऑन द ओरल एग्जामिनेशन पे, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स जो है दे आर नॉट ऑब्जर्व दैट हाउ दे हैव कलेक्टेड द डेटा, हाउ दे हैव एग्जामिन्ड ऑब्जेक्टिवली एंड सब्जेक्टिवली द पेशेंट. तो इससे ऑब्वियसली रिलेबिलिटी जो है वो बहुत मुतासिर होगी, कम आएगी. तो इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं कि ये जो लैकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैंडिडेट्स या द स्टूडेंट्स है, ये अगर हम कर ले तो इससे भी रिलेबिलिटी बेहतर हो सकती है एज वेल एज द वैलिडिटी. सो ऑब्जर्विंग द कैंडिडेट व्हाइल दे इंटरेक्ट विद द पेशेंट, although observing the candidate is not a major contributor to reliability, but it having some sort of contribution. Training the examiners to structure examination process and increasing the number of cases will again जो है ये रिलेबिलिटी इंक्रीज करेगी. हमने इससे पहले अगर हम स्लाइड पे जाए तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसकी जो यहाँ पे ये हमने ये डिस्कस किया था कि इसका जो रिलेबिलिटी है इनएडिक्वेट, जो कम रिलेबिलिटी किस वजह से हो सकती है, या तो लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से हो सकती है, लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से हो सकती है,
या लिमिटेड सैम्पलिंग से हो सकती हैं। तो लिमिटेड सैम्पलिंग जो है हम किस तरह कर सकते हैं, हम अगर केसेस के जो तादाद है वो इंक्रीज करें और लिमिट ऑब्जर्वेशन के की हम लैकिंग ऑब्जर्वेशन के बजाय उसके ऑब्जर्वेशन करें, तो somehow we can have that enough reliability for that assessment method. The next one is the 360 valuation. 360 valuation इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें से जो फीडबैक होता है ये मल्टीपल सोर्स से आता है, तो इसको हर डायरेक्शन से उसकी असेसमेंट होती है, फीडबैक होती है। 360 valuation is a multi-source feedback assessment system that evaluate an individual's competence from multiple perspectives. Feedback is objectively and systematically collected via a survey or rating scale that assesses how frequently a behavior is performed. That is the continued process. और यूजुअली जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ वहां पे चल रहा होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, नॉट अ स्पेसिफिक केस, नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट, बल्कि उसकी ongoing जो उसकी प्रैक्टिस होती है वो ऑब्जर्व की जाती है, उसका हर एस्पेक्ट जो है देखा जाता है। Multiple evaluators who may include the superiors, peers, students, administrative staff, patient, and families rate trainee performance in addition to the trainee doing a self-assessment. The rating scale vary with the assessment context, obviously, and 360 evaluation have been used to assess a range of competencies, including professional behavior at undergraduate and postgraduate level. However, the use of 360 evaluation and summative assessment is not indicated due to lacking of reliability and validity. Reliability इसकी इसलिए कम आ रही है कि it depend on the again the perception of the जो पेशेंट होती हैं, जो उनकी फैमिलीज होती हैं, या जो उनकी सुपीरियर होते हैं, तो उनकी जो जस्टिफिकेशन होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती है बिटवीन ऑल ऑफ देम, या उनकी जो असेसमेंट होती है वो इतनी मतलब अनबाइस हो सकती है, बाइस, तो इसमें बहुत सारे की जो है कंट्रडिक्शन आ सकती है, तो दैट्स वाई वो रिलायबल नहीं है। तो इसको दे कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स लैकिंग ऑफ रिलायबिलिटी, ये समेटिव असेसमेंट जो है इसमें ये फिट नहीं आती, और इसको रिकमेंडेशन यही है कि इसको नहीं यूज किया जाए। The use in the formative evaluation might be more appropriate since evaluators provide more balanced and honest feedback when the evaluation is formative and used for the developmental process rather than for fast and fail decision. ये बात हमने डिस्कस की कि इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन we shouldn't use it at the summative examination. It should be borne in mind that this type of evaluation can be time consuming, obviously, and administratively demanding. This is a type of checklist which can be used during the 360 evaluation. This is a Likert scale. अगर इसमें हम देखें, strongly disagree, somewhat disagree, neutral and somewhat agree, and strongly agree. Result identifies self and role clearly. इसमें अगर आप देखें तो इसमें न सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, इसकी जो पेशेंट वैल्यूज है, इसकी जो बिहेवियर है, इसकी जो पूरी जो हर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ उसकी जो डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज है वो इसमें असेस की जा सकती है। This is another assessment method which is less commonly used, that is known as the mini clinical evaluation exercise or the mini CEX. The mini CEX are based on tutor observation of routine interaction that supervising clinician and trainees which having on a daily basis. Mostly this clinical evaluation exercise mini ये ज़्यादातर post graduate students में ज़्यादा use की जाती है, because that involves some assessment of high level of that clinical competency. So in the undergraduate student, this type of assessment method is very less used, and that is not recommended to be used in that undergraduate students. These training patient encounters occur on multiple occasions with different evaluators and in different settings. They are relatively short observation, which may be between that 15 to 20 minutes, and which performance is recorded on a 4-point scale as a Likert scale.
Year 1 is unacceptable, 2 is below expectation, 3 is met expectation, 4 is the exceeded expectation. तो ये चार उसकी we can say that grades होते हैं, उसके बेस पर जो है उसकी फिर असेसमेंट होती है. The mini CX incorporate an opportunity for feedback from the evaluator and is mostly used for the formative assessment. Evaluators consist mostly of tutors whose primary role is to teach a clerkship student. Several competencies are evaluated by the mini CX: history taking, physical examination, clinical judgment, counseling, professionalism, and other generic qualities. This is one of the example of the mini clinical evaluation exercise. और यहाँ पर हम देखें तो we have that कि ये it was satisfactory, it was unsatisfactory, it was satisfactory, it was superior. तो ये मुख्तलिफ उसकी ग्रेडिंग जो है की जाती है. Portfolio जो है, this is a collection of student work which provides evidence that learning has taken place. अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे हम इसको लॉग बुक भी कह सकते हैं कि ये उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो कुछ वो कर रहा है और जो उसकी लर्निंग होती है, उसकी पेशेंट के साथ उनका जो कनेक्शन होता है, उनकी जो एग्जामिनेशन होती है, उनकी रिकॉर्ड होती है, उनकी प्रोटोकॉल होती है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, उनकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो तमाम डिटेल उसमें वो लिख देते हैं और फिर इसको चेक किया जाता है. जो उसकी क्लिनिकल सुपरवाइजर होते हैं वो इन बुक को, इनकी जो लॉग बुक है, उनकी जो पोर्टफोलियो है, उनको फिर वो असेस करते हैं और इसके बेस पर उसके मार्किंग भी करते हैं. So it includes documentation of learning and progression, but most importantly, a reflection of these learning experiences. Portfolios documentation may include case reports, record of practical procedures undertaken, videotapes of consultation, project reports, sample of performance evaluation, learning plans, written reflection about the evidence provided. Scoring method include checklist and rating scale developed for a specific learning and assessment context. Scoring are usually carried out by several examiners who probe students regarding portfolio contents and decide whether the student has reached the required standard. Portfolio assessment is considered a valid way of assessing outcomes. However, it has low to moderate reliability due to the wide variability in the way of portfolios are structured and assessed. अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी, इसमें जो कंटेंट है, जिस तरह हमने पहले इसके लिस्ट किया, तो इसमें किस तरह की कंटेंट होगी, कौन सी कंटेंट होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी है, कौन सी नहीं है. So it is a wide range of such diversity of these components. That's why उसकी जो वैलिडिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रेलेबिलिटी जो है उसकी इतनी अच्छी नहीं है. Also, this form of assessment is not considered very practical due to the time and effort involved in its compilation and evaluation. For these reasons, portfolios are commonly used for the formative assessment and less commonly for the summative purposes. इससे पहले जो हमने 360 evaluation डिस्कस की, वो भी जो है हमने कहा कि मोस्टली ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, and that's why जो है ये it should be used in the formative assessment but not in the summative assessment because of its low reliability as well as because of its time consumption. The strength and extent of the evidence base for the educational effects of portfolios in the undergraduate setting is very limited. तो अगर हम इसको समराइज कर ले इन तमाम डिस्कशन को, तो various assessment methods that test a range of competencies are available for examiners. The choice should be dictated by fitness for the purpose in a number of utility criteria. जिस तरह हमने कहा था कि जिस तरह की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव है, तो हर एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको असेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक जो है होते हैं. नॉट लाइक कि हर एक ऑब्जेक्टिव को हम हर एक टेस्ट के साथ हमारी चॉइस नहीं हुई थी, बल्कि स्पेसिफिक डेटा को, स्पेसिफिक कंटेंट को जो है स्पेसिफिक तरीके से ही असेस की जा सकती है. The importance and weighing of these criteria depends on the purpose of the assessment method, either summative, formative, or both. That was the end of the third session, in which we discussed the various methods which can be used for the assessment of practical skills of the students of the health sciences at undergraduate level. The most commonly used method is OSCE and OSPE.
That's why we will discuss it in the next session in detail about what are the advantages, disadvantages, how to arrange, how to manage, and what are the components and how it can be checked. So it will be discussed in detail in the next session. Thank you so much to all of you.